Hello CSR chair aspirants. So we are back with the immunology series, and this is the last video of the whole series of the immunology particularly. So today in this video we are going to study about the disease particularly related to immunity, and then major histocompatibility cells like MHC and graft rejection. So these are the topic that we are going to cover in this video. Okay, so let's start. So the first disease is malaria. Okay, so malaria, the causative agent of the malaria is Plasmodium falciparum, which is a protozoa. Okay, so the carrier of pathogen is female anopheles, which feed on the human blood, and the male anopheles, they basically feed on plant juices. The symptoms that included in the malaria disease are high fever, headache, anemia. Okay, so during infection, there are the overproduction of TNF alpha, L12 occur. Okay, so basically this is the pro-inflammatory cytokines which is produced by Th1. We have already seen in our previous video. Hope you have watched that. So IL-12, like interleukin 12, is responsible for causing fever particularly. So during this infection, three different types of epitopes which is present on antigen are expressed by the pathogen. The first one is sporocyte. Okay, so and sporocyte is the first epitope which is injected into human blood by mosquito bite. Okay, after remain in the blood only, it is only remain for the 30 minutes in the blood. Okay, and therefore the immune system is not generated. Then the second one is circumsporocyte. It is second epitope of the pathogen which interact with the cell surface of the hepatocyte, which is liver cells. The C terminal of this end of this antigen is essential for the cell surface attachment. Okay, particularly after entering into the hepatocyte, maximum of life cycle of this pathogen is spent intracellular. So these stage is known as cyaosine stage. Okay, the third one is merocyte. After spending time in liver cell, the pathogen is released in large quantity into blood after 3 to 4 days. Okay, so merocytes are third epitope of the pathogen and causes RBC lysis, which is also known as anemia. Like anemia occurs. So circumsporocyte, which is C terminal end, should be targeted by malaria vaccine. The problem which is associated with the malaria are the some are hurdles of curing this disease. The epitope of this malaria is keep changing during life cycle, so it is difficult to target the epitope. And then the plasmodium expresses multi-drug resistance, which show chemo resistance. So that was the second problem which is occurring in the malaria. So second disease is HIV/AIDS. Okay, so the genome of the HIV/AIDS is single stranded with the two copies. It encoded reverse transcriptase, which converts basically RNA into cDNA. So in this, the integrase enzyme is responsible for integrating cDNA on the host chromosome. So this is also known as provirus. The antigenic variation occur in HIV proteins because reverse transcriptase do not have proofreading activity. So there is an antigenic variation because there is no proofreading activity. So main receptor for the HIV is CD4, which is expressed on the T helper cells and the monocytes. Now, person infected with AIDS have reduced level of T helper cells because T cytotoxic cell and other phagocytic cells are responsible for killing viral infected T helper cells. So there are two important co-receptor which is involved in the HIV infections, especially which helps in T helper cells and monocytes. CXCR4 alpha chemokine receptor on T helper cells. Then the second one is CCR5 beta chemokine receptor, which is present on monocytes. So if there is any mutation in this co-receptor, basically it make the individual resistant for HIV infection. So yeah, for the treatment, generally we target heart, that is highly active antiretroviral therapy is used. In this process, two different types of inhibitor are used. So first we can target the reverse transcriptase enzyme, like we can add the inhibitor of that enzyme. The second one is viral protein assembly inhibitor, and we didn't want to assemble all the viral protein, so it will interfere with the packaging of the virus. Now
The problem which is arrived in this disease, that is in HIV, that is there are antigenic variation because of the absence of proofreading. The second one is antibody cannot favorably interact with the glycosylate envelope protein of virus because they are the part of the animal cell membrane. So the second problem is this. Okay, now we are moving with the third disease, influenza virus. The symptoms in this disease is high fever, severe headache, joint pains, running nose, like cold, etc. Now we are talking about the genome. The genome is negative strand, like sense negative single strand RNA. So there are basically three different types of influenza virus. Influenza virus A, B, C. Particularly B and C B and C particularly infect the human, whereas A infect the birds and other mammals. There are two important surface glycoprotein of influenza virus are hemoglutinin and neuraminidase. तो देखा जाए तो हीमोग्लोटिन जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है वायरल एंट्री के लिए, और न्यूरा अमाइनेडेज जो होता है वो वायरल के एग्जिट करने के लिए फ्रॉम द होस्ट इन्फेक्टिव सेल्स. ठीक है, ये दोनों सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं. तो नॉमेनक्लेचर जो इन्फ्लुएंजा वायरस की दी गई है वो ये हीमोग्लोटिन और न्यूरोमाइनेडेज के बेसिस पे ही दी गई है. तो बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं जो कि जनरेट करते हैं डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, तो पहला होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, दूसरा होता है एंटीजेनिक शिफ्ट. एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या होता है? बेसिकली ये अगर जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जीन लेवल पे म्यूटेशन हो जाए इसमें हीमोग्लूटिनिन में और न्यूरोमाइनेडेज एनकोडिंग जीन में, तो उसको एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. एंटीजेनिक शिफ्ट क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स assortment ऑफ डिफरेंट हीमोग्लूटिनिन एंड न्यूरोमाइनेडेज प्रोटीन इन द सेम होस्ट. न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरस इज प्रोड्यूस बिकॉज असॉर्टमेंट हो जाएगा. ठीक है, डिफरेंट इसके प्रोटीन का, तो एक नया स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट बोलते हैं. ठीक है, जो चौथा डिजीज है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे कॉज होता है? ये भी एक प्रोटोजोवन डिजीज, प्रोटोजोन से ही कॉज होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस. जो वेक्टर होता है इसके लिए वो सीसी फ्लाई होता है, और जो सिम्टम्स होता है उसमें इसमें बुखार होता है, हेडेक होता है, और लेटर स्टेज में क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, और जिससे कि क्या होता है कि इंडिविजुअल नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. ओके, on the basis of surface of pathogen variable surface glycoprotein VSG is expressed. So is a particular pathogen contain multiple VSG gene, but at a particular time only VSG gene is expressed. So because of different VSG expression epitope of the pathogen keep changing, so adaptive immune system will not function properly in this. Now the treatment we are using for this disease sleeping sickness इस पेंटामाइनिडीन जो ड्रग है वो इसमें यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस. फिफ्थ डिजीज जो है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइक्रोबैक्टीरिया के वजह से कॉज होता है. इट इज़ अ बेसिकली एयरबॉर्न डिजीज विच इज़ हाईली कंटाजियस. तो जो माइक्रोबैक्टीरिया क्या करता है, पहले एल्वियोलर माइक्रोफेजेस में को इन्फेक्ट करता है जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है. फिर क्या होता है, ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस शो करता है फैगोसाइटोसिस में, क्योंकि ये फैगोलाइसोसोम बनने ही नहीं देते, उसका फॉर्मेशन होने ही नहीं देते हैं. इस इन्फेक्शन को डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं. हमने इसको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में देखा था, जो इसके वजह से होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी. अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख ले, जो कि जिसमें कि हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तो वो यूजफुल रहेगा. इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होता है. ग्रेनुलोमा क्या होता है, ये जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड माइक्रोफेजेस सराउंडेड बाय लार्ज पॉपुलेशन ऑफ TH1 सेल्स. TH1 सेल को अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड माइक्रोफेजेस सराउंड करके उसको ग्रेनुलोमा बोलते हैं. तो TH1 सेल्स आर ओवर प्रोड्यूस इंटरफेरन गामा विच इज रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रोफेजेस. सो ग्रेनुलोमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग इंट्रासेलुलर माइक्रोबैक्टीरिया. सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनुलोमा की वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर माइक्रोबैक्टीरिया किल होता है. एंड इज ऑल्सो नोन एज सेल mediated immunity. For the treatment purpose of this, drugs like isoniazid, rifampicin, ethambutol is used. The treatment program for tuberculosis is known as DOTS प्रोग्राम चलाया गया था ताकि माइक्रोबैक्टीरिया को इरेडिकेट किया जाए. सो हाँ, प्रॉब्लम क्या होता है माइक्रोबैक्टीरिया के पास, इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म हो जाता है.
ये इनएफिशिएंट होता है बीसीजी वैक्सीन के लिए। इकोनॉमिक बर्डन डिजीज़ है ये इकोनॉमिकली। हम जो स्टेनिंग यूज़ करते हैं वो एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोसेस ज़ील नेल्सन स्टेन इज़ यूज्ड एंड बैक्टीरिया अपीयर पिंक इन कलर। ओके, तो स्टेनिंग के लिए एसिड फास्ट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। It is highly contagious in nature. Then the paratuberculosis form is responsible for infecting liver, intestine, bones. Paratuberculosis क्या होता है? सेल क्या करता है? लंग को छोड़ के अदर सेल को इन्फेक्ट कर देने लगता है, उसको paratuberculosis कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो डिवीजन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज 20R। ओके, तो इट रिक्वायर्स मैनी टाइम। हमें एक छोटा सा नोट है, मोनोसाइट्स के बारे में दिया है। मोनोसाइट एक मैक्रोफेज है। मोनोसाइट के ऊपर जो सेल मार्कर होता है यह कहा जाए कि यही मोनोसाइट है, वो है CD32 एंड CD64। ये एक्सप्रेस करता है MHC2 को, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जैसे भी बिहेव करता है। तो बेसिकली डिफरेंट मैक्रोफेजेस के डिफरेंट नेम है। अगर एज मैक्रोफेजेस लंग्स में प्रेजेंट हो तो उसको एल्वियोलर बोलते हैं। ब्रेन में प्रेजेंट हो वो मैक्रोफेज तो उसको माइक्रोग्लियल बोलते हैं। किडनी में हो तो मेसेंजियल बोलते हैं। बोन्स में तो ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। लिवर में हो तो कफर बोलते हैं। ये सारे सेल्स बेसिकली मैक्रोफेज ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल्स विच वी कॉल्ड MHC1। ये बेसिकली सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होता है विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन नियरली ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड एंटी प्रेजेंटिंग सेल्स। In human, it is also known as HLA, which is human leukocyte antigen, and in mice it is known as H2 complex. इसी को माइस में H2 complex बोलते हैं। और ये जो MHC होता है ना, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस टू द इंडिविजुअल। ओके, सो द क्लस्टर ऑफ जीन प्रेजेंट एट short arm of 6th chromosome in human. Okay, the main function of MHC is to express peptide on antigen presenting cells and interact with T lymphocytes. Another function of MHC is taken into account is during organ transplantation or vascular grafting. Nearly 10 to 15% MHC is identical in different individuals. तो तब भी ये काफ़ी काम आता है। और 90% आइडेंटिकल इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो विद इन द सेम फैमिली MHC इज आइडेंटिकल नियरली 50%। तो MHC वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। बेसिकली 3 टाइप ऑफ MHC होता है, MHC1, MHC2, MHC3। MHC1 के बारे में देखते हैं। ये सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन MHC1 जो होता है सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि नियरली ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। 5% कार्बोहाइड्रेट होता है, 95% इसमें प्रोटीन होता है जो इसका स्ट्रक्चर है। Majority of the cells are non-professional antigen presenting cells like epithelial cells, endothelial cells, fibroblasts, etc. Okay, MHC1 जो होता है made up of 2 chains, alpha heavy chains and small subunit known as बीटा 2M माइक्रोग्लोबुलिन। अभी हम आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। बीटा 2 जो M जो होता है ना वो इंटरेक्ट करता है नॉन कोवेलेंटली विद द अल्फा हैवी चेन एंड इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द MHC मॉलिक्यूल। जो अल्फा ये जो B2M है वो स्टेबिलिटी देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन MHC जीन प्रोडक्ट। जो है ना ये नॉन MHC जीन प्रोडक्ट है। इसका स्ट्रक्चर ये है। सो इसका ऐसा चेन है, ये हैवी चेन है, ठीक है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और एक B2M है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है ना पॉलीमॉर्फिक होता है और अल्फा 3 जो होता है ना वो कंजर्व्ड होता है। और अल्फा 2 अल्फा 1 के बीच में जो ना ये क्लोज एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट होता है। और अल्फा 2 ये वाला है ना ये वाला स्ट्रक्चर ये डिस्टल एंड होता है, इसको प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। जो अल्फा 2 जो होता है CHO ग्लाइकोसाइलेशन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन होता है। अल्फा 3 होता है वो इंटरेक्ट करता है CD8। MHC1 जो होता है ना हमेशा CD8 को ही इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और विद T साइटोटॉक्सिक सेल्स। So closed and peptide binding cleft is present between the alpha 1 and alpha 3. Alpha 3 interact with the CD8. We already seen. Alpha 2 is glycosidated. RBC जो होता है non nucleated cells होता है which do not display MHC1 molecule. They express CD47 which prevent RBC lysis by the natural killer cells. So ये चीज़ याद रखने वाली है कि CD47 एक्सप्रेस होता है RBC सेल्स के द्वारा ताकि RBC का लाइसिस ना हो नेचुरल किलर सेल्स के अकॉर्डिंग। तो स्पर्म सेल्स जो होता है ना वो नहीं डिस्प्ले करते हैं MHC1, वो भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि MHC1 फ्रॉम द लाइसिस इज प्रिवेंटेड बिकॉज दे डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है पहली तो ये चीज़ है RBC जो है, पहला है RBC जो कि डिस्प्ले नहीं करता है MHC1।
और फिर दूसरा जो है स्पर्म सेल, क्योंकि वो ब्लड के कांटेक्ट ही नहीं आता इसलिए वो नहीं करता। और 8 to 10 लॉन्ग पेप्टाइड जो इंटरेक्ट करते हैं वो MHC1 से करते हैं, ठीक है। तो सी टर्मिनल, जो सी टर्मिनल है एंड ऑफ द पेप्टाइड शुड कंटेन हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के अंदर है। β2m है जो डाउन रेगुलेटेड होता है इन कैंसर सेल्स एंड वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी चीज यहाँ पे पेपेन का साइट होता है, यहाँ कट करता है, ठीक है। अगर हम इसको अगर इसी चीज़ को हम SGS पेज पे रन करें तो 2 ही बैंड आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो ये B2M एक अलग आएगा और एक अल्फा चेन अलग आएगा। दूसरा अगर हम रिड्यूस SGS पेज में डालेंगे तो भी 2 बैंड आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है ही नहीं, तो ये बेसिकली ये एक आएगा और ये दूसरा आएगा, तो इसलिए ना। एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय MHC1। MHC1 एंटीजन कैसे प्रेजेंट करता है? तो बेसिकली MHC1 एंडोजीनियस एंटीजन को ही प्रेजेंट करता है, लाइक सेल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, इनकम्प्लीटली ट्रांसलेटेड प्रोटीन, कैंसर प्रोटीन एंड कैंसर प्रोटीन इज प्रोसेस बाय साइटोसेलिक पाथवे। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MHC1 है वो साइटोसेलिक पाथवे से होता है। और जो MHC2 है ना उसमें इसमें एंडोजीनस एंटीजन है ना, उसमें एक्सोजीनस एंटीजन है, वो हम आगे देखेंगे। In this pathway, polyubiquitinylation of endogenous protein occur, जिसमें कि laterally उसको डिग्रेड कर देता है by proteasomal complex। तो इसमें large number of peptide are produced in the cytosol on the basis of surface of rough endoplasmic reticulum। ABC जो ट्रांसपोर्टर होता है known as TAP, that is transporter associated with antigen processing। TAP is responsible for mediating interaction between endogenous peptide and the MHC1 molecule। So TAP की वजह से दोनों इंटरेक्ट करते हैं। After interaction, MHC1 express on the surface of antigen presenting cell which interact with the T cytotoxic cell, that is CD8 cluster differentiation 8। Drug known as MG132 इंटरफेयर करता है with the cytosolic pathway, ठीक है। Which of the following, ये 2 क्वेश्चन है, which of the following mice will show minimal rejection response after tissue grafting। तो ये हम आगे देखेंगे, तब हमें ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम इसका आंसर ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। जो सेकंड MHC है वो MHC2 है। इट इज सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस ऑन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दैट इज B cells, मैक्रोफेजेस, जनरेटिंग सेल्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन। अल्फा चेन जो होता है 33 किलो डाल्टन का होता है, बीटा चेन 28 किलो डाल्टन का होता है। ये इंटरेक्ट करते हैं एक्सोजीनस पेप्टाइड से। मैंने क्या बोला था, MHC1 एंडोजीनस पेप्टाइड से होता है और ये एक्सोजीनस पेप्टाइड विच इज बेसिकली इन ब्लड, ओके। तो ये जो अल्फा 1 होता है, अल्फा 2 दोनों ही कार्बोहाइड्रेट बाइंड होता है, यहाँ से ओपन होता है। ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये पेपेन का साइट है। ये इंट्रैक्ट बीटा 2 इंट्रैक्ट करता है CD40 हेल्पर सेल से। वहाँ पे कौन इंट्रैक्ट कर रहा था? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अल्फा 3 इंट्रैक्ट कर रहा था। CHO एन बाइंडिंग, ये बीटा 1 जो है यहाँ पे CHO एन बाइंडिंग पेप्टाइड का जो बाइंडिंग क्लेफ्ट है यहाँ पे। सो इसमें क्या है, अल्फा 1 और बीटा 1 है पॉलीमॉर्फिक, और अल्फा 2 बीटा 2 कंजर्व्ड होता है। और इसमें हमें जैसे दिख रहा है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1, सॉरी, ये जो 3 है वो ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। इसमें 13 to 18 लॉन्ग, उसमें 10 ही होता है आई गेस, पेप्टाइड इंट्रैक्ट करता है विद अल्फा 1 एंड अल्फा बीटा 1 एंड इट इज़ एन ओपन एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। वो ओपन एंड नहीं होता वो वाला MHC1। हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज आर प्रेजेंट थ्रू आउट दी पेप्टाइड, हाइड्रोफोबिक थ्रू आउट दी पेप्टाइड होता है, ठीक है। इस अब एंटीजन प्रेजेंटेशन MHC2 कैसे प्रेजेंट करता है, राइट। तो बेसिकली एक्सोजीनियस एंटीजन जो होता है विच इज़ यूजुअली बैक्टीरियल पैथोजन होता है, इट इज़ प्रोसेस बाय एंडोसाइटिक पाथवे, ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस फॉरेन प्रोटीन इज डिग्रेडेड इन दी लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में फॉरेन पैथोजन डिग्रेड होता है। MHC2 जो होता है मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंडोजीनियस पेप्टाइड बाय इनवेरिएंट चेन area, that is rough endoplasmic reticulum, and by clip इन गोल्गी वेसिकल्स। क्लिप जो होता है ये डिग्रेडेड होता है, डिग्रेड हो जाता है कंपोनेंट ऑफ इनवेरिएंट चेन। पेप्टाइड प्रोड्यूस बाय लाइसोसोम इज इंटरैक्ट विद MHC2 इन गोल्गी वेसिल्स। सो HLA और जो DM मीडिएटेड इंट्रैक्शन होता है बिटवीन एक्सोजीनस पेप्टाइड एंड MHC2 कॉम्प्लेक्स, HLA-DO is a natural inhibitor of HLA-DM. During infection, overproduction of interferon gamma occurs, which induces expression of HLA-DM and nullifies the effect of HLA-DO. Okay, so drug known as leucopeptine inhibits the antigen processing by MHC2 molecule. So
पेप्टाइन जो होता है वो इनहिबिट करता है एंटीजन प्रोसेसिंग बाय MHC2 मॉलिक्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल्स के होता है, बेसिकली दे आर कोडोमिनेंट इन नेचर, they have multiple alleles, one functional unit is inherited from mother and other from father, functional unit को हम बोलते हैं haplotype। ओके, syngenic मीन्स क्या होता है complete homogen, and causegenic क्या होता है MHC loci is different, MHC जब loci different होता है उसको causegenic बोलते हैं, syngenic जब complete homozygous होता है। एक छोटा सा टॉपिक है ग्राफ्ट रिजेक्शन। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, इन MHC नॉन आइडेंटिकल बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट रिजेक्शन रिस्पॉन्स अकर इन द रेसिपिएंट, ठीक है। इफ MHC इज नॉन आइडेंटिकल बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट, ठीक है, तो रिजेक्शन रिस्पॉन्स अकर इन द रेसिपिएंट। फॉरेन टिश्यू MHC is recognized as an antigen, anti-cytotoxic cells provide immediate rejection response। इसमें क्या होता है, सेल लाइसिस अकर ऑफ द फॉरेन टिश्यू लीडिंग टू द इंटरनल ब्लीडिंग। लेटर T helper cell provide a massive rejection response। To overcome this problem, immunosuppressive drug हम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, रिफामाइसिन, साइक्लोस्पोरिन A। साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एक्टिवेशन T lymphocyte। टू कंट्रोल द इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू द पेशेंट। इफ after immunosuppressive therapy is over, rejection occurs, it is due to the minor histocompatibility। So genes for minor histocompatibility are present on Y chromosome and mitochondrial chromosomes, okay। Now तीसरा टाइप जो होता है MHC3 होता है, it does not participate in antigen representation, it encoded complement factors like C3, C3A, C3B, etc. Heat shock proteins, pro-inflammatory molecules like cytokines। एक छोटा सा नोट है यहाँ पे, CD1 जो मॉलिक्यूल होता है ना माइक्रोफाजेस पे, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रेजेंटिंग द माइक्रोबैक्टीरियल लिपिड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर इट इज सिमिलर टू MHC1। तो जो जैसे कि हमने अभी देखा कि हमें पता है कि एंटीजन के ऊपर जो जिस पार्ट से इंट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एपिटोप, और जो एंटीबॉडी जिस पार्ट से इंट्रैक्ट करता है उसको पैराटोप बोलते हैं। जो MHC जिस पार्ट से इंट्रैक्ट करता है एंटीजन से, उस पार्ट को हम बोलते हैं एग्रीटॉप, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द होल immunology, which is not that described, but it is enough for the exam purpose। So I hope this video lectures help you in your preparation, and happy new year to all of you, so that we hope that will crack the CSI Net JIR of Life Science 2023 in April exam। So yeah, all the best, happy learning।